से आप ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं आपका डेली लाइफ में। और एमएफडीज के लिए 6 यूज केसेस हम 6 डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ यूज केसेस हम बना हुआ है। और उसमें एक रियल टाइम एग्जांपल्स आपको कैसे सिंपली टू स्टार्ट विद कैसे यूज कर सकते हैं, और उसका एडवांस्ड वर्जन भी हम पूरा पीडीएफ है हमारे पास। वो भी आफ्टर द सेशन आप फीडबैक, after the session there'll be a feedback form। उस if you apply in that feedback form and get your certificate, उसके साथ ये पूरा डिक्शनरी और prompt library मिलेंगे, और you can use that for trying AI out at your own pace। So before I start, I'm just sending a poll across to all of you। Let me check। Yeah, आपका स्क्रीन में एक पोल आया होगा। इफ यू कैन जस्ट चेक ऑन द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है कि इस 4 ऑप्शंस में व्हाट आर मोस्ट रेलेवेंट फॉर यू, आपको किस चीज में रिलेट कर सकते हैं। आपको 100 प्लस कस्टमर्स है, आप दिन में यू स्पेंड मोर देन 2 आवर्स, और आपका मार्केटिंग कंटेंट आप खुद के बना रहे हैं, और इन टर्म्स ऑफ आपको ये 100 प्लस कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए आपके पास एक सीआरएम जैसे ऐसे कुछ टूल भी है। तो इज अ आप मल्टी। सिलेक्शन करते वक्त एक से ज्यादा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमें गाइड करेगा कि आगे के स्लाइड्स पे कौन से टॉपिक्स पे हमें फोकस करना चाहिए। सो आप प्लीज ये पोल आप प्लीज लीजिए सो दैट यू नो वी कैन मेक दिस सेशन अ लिटिल मोर इंटरैक्टिव। या जस्ट वेट फॉर अनदर 15 सेकेंड्स, उसके बाद ये रिजल्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। ओके, सो आई एम एंडिंग द पोल। ये रिजल्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। सो एज यू सी 70% ऑफ आप ये क्वेश्चंस आंसर किया है, उसका 70% ऑफ यू हैव मोर देन 100 कस्टमर्स, 100 क्लाइंट्स। वो बहुत प्राउड, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इतना कस्टमर्स को आप हैंडल कर सकते हैं। एंड एवरी डे अराउंड 60% ऑफ यू स्पेंड मोर देन 2 आवर्स ऑन कम्युनिकेशन। ये अराउंड 1/3 ऑफ यू खुद से मार्केटिंग कंटेंट, you create your own marketing content, and only very little of you use CRM। तो इसमें I what I will do is this is very good information। इसमें I will tell you how we can help, AI can help, and इन 4 चीजों में how you can improve using AI as well। Okay, great, thank you everyone for sharing that। तो पहले I'll just take you through what is generative AI, right? So first I think AI, मेरा हिस्ट्री में when I started building in AI 10 साल पहले, it was more a simpler tool। सिंपलर टूल मतलब आपके पास एक ऑरेंज है, एक एप्पल है, हम वो मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, और एक नया इमेज उस मॉडल को वी सेंड इट टू द मॉडल। उसमें इट विल प्रेडिक्ट ये एप्पल है या ऑरेंज है, प्योरली फ्रॉम द इमेज हाउ ह्यूमंस कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट। बट अभी जनरेटिव एआई में एक बहुत नया चीज है जनरेटिव एआई में। वो है कि इट कैन क्रिएट कंटेंट। क्रिएट मतलब उसको एक पूरा नॉवेल, एक पूरा पोएम, एक पूरा आर्टिकल, इट कैन राइट इट बाय इटसेल्फ। उसका एक पूरा इमेज जनरेट कर सकते हैं। सो एप्पल का इमेज इट कैन जनरेट, इट कैन क्रिएट हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस ऑफ एप्पल्स इन डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स। ऐसे कुछ भी कर सकते हैं एआई के साथ। और आपको ऑडियो भी जनरेट कर सकते हैं, वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं। तो हाउ आई वांट यू टू थिंक ऑफ एआई इज आपके एक डिजिटल असिस्टेंट है आपके पास पूरा दिन। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी
चीज में हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज यूज एआई। और आपका टू क्रिएट ये सब कंटेंट, आपको सोशल मीडिया के कंटेंट बनाना है और आपको क्लाइंट्स बढ़ाने के लिए आपको कुछ हेल्प चाहिए, उसके लिए यू कैन यूज एआई एज ए क्रिएटिव पार्टनर। आपको मार्केट्स रिसर्च करना है, रिपोर्ट्स बनाना है टू शेयर विथ योर क्लाइंटेल, यू कैन यूज इट एज अ एनालिस्ट। और ये सब के लिए कंटेंट क्रिएशन बिकम्स द फंडामेंटल कोर ऑफ दैट एज वेल। तो ये है सिंपल डिफरेंस। पहले बहुत प्रेडिक्टिव चीज था, अभी एआई इज एबल टू जनरेट कंटेंट। तो आपके पास बहुत पावर है जनरेटिव एआई के साथ। Now, quickly, I'll just take you through why it is becoming, why everyone is being crazy about AI, right? Yes, left side में आपको ज्यादा you'll see a lot of logos. ये सब logos आपको पता होगा, at least 50% आपको पता होगा, from Netflix to Facebook to Twitter to WhatsApp, Instagram, अभी TikTok. But इस सारे कंपनीज में it took more than 10 years on average, sometimes 5 years, to cross 10 crore users. 10 crore users using this software or this application. Um, it took so many years in history, right? But in ChatGPT, or when ChatGPT came into the picture, it just took it 2 months after release in 2022 to get to 10 crore users. वो बहुत शिफ्ट है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, क्योंकि दैट इज जस्ट टिल 2022, इन द फर्स्ट 2 months नाउ बिलियंस ऑफ यूजर्स यूज इट। बट वो that clearly shows how important it is to use this new technology। और अभी it has been made free by all of these players, गूगल भी, चैट जीपीटी भी, और सब प्लेयर्स में अभी नया क्लाउड भी है, उसका भी फ्री प्लान्स है। So it is important you start using this on a daily basis in your business, if not even in your personal life as well. So quickly I'll take you, I'll start you with the basics. अभी 150 लोग हैं इस कॉल पे, तो some of you might have already used ChatGPT. Some of you might use it every day, but सारे लोगों के लिए I'm just going to start with the basics, and I'll quickly move on to the important bits of how you can use it on your daily basis. But पहला चीज है कि how can you start using it? Well, some of you might not have used this at all, so I'm just going to start with that. So ये चार थोड़ा examples है। तो एक एग्जाम्पल है, राइट अ प्रोफेशनल एसआईपी रिमाइंडर फॉर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, राइट। सो इसमें दो कीवर्ड्स आप you have to look at two clear keywords that I've added here. Yeah, hey, keep professional SIP reminder. So I can ask it to write a simple SIP reminder. I can ask it to write a funny SIP reminder. I can ask it anything. बट मेरे लिए आई नीड अ प्रोफेशनल एसआईपी रिमाइंडर। और किसके लिए? कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, नॉट अ एग्रेसिव इन्वेस्टर हु मे बी इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 35, बट मे बी अ मच ओल्डर इन्वेस्टर, 45 ईयर्स के बाद एक इन्वेस्टर है, उसके लिए आई नीड अ एसआईपी रिमाइंडर सो दैट आई कैन मोटिवेट देम। एंड आई हैव एडेड इंडिया एज वेल। इंडिया इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस कैन बी दिस रिक्वेस्ट कैन बी फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, तो आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा to the tool as well. So this is a simple example. I'm just going to write that uh, in Google and show you. तो So जब तक नितिन वो yeah, पुल अप करते हैं, एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि एआई या ये चैट जीपीटी या जेमिनाई तभी सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए जब आपका प्रॉम्प्ट बहुत स्पेसिफिक रहेगा। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी इमेज चाहिए, सब कुछ आपको चैट जीपीटी या जेमिनाई बना के दे सकते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं, नितिन हमें सबके बारे में बताएंगे। लेकिन आपका प्रॉम्प्ट ही वो की है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि आपका रिस्पॉन्स कितना एक्यूरेट आता है आपके लिए। सो जिप के एग्जाम्पल में हमने देखा, उन्होंने प्रोफेशनल वर्ड यूज किया था, कंजर्वेटिव वर्ड यूज किया था। तो आपका क्लाइंट अगर कंजर्वेटिव है तो आप वो बताए चैट जीपीटी या एआई को, सो दैट जो रिस्पॉन्स आता है आपके लिए वो आप बस कॉपी करके यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉम्प्ट बहुत ही वेग रहेगा तो आपको रिस्पॉन्स भी बहुत ही वेग मिलेगा। सो ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।
Yes, thank you. So what I've done is वो exactly वो PPT का sentence I've just copied it. ये Gemini है, ये आपको दो तीन टूल्स आई विल शो यू एज वेल. जेमिनी है, चैट जीपीटी है, ये बस जेमिनी है, गूगल का है. उसमें आई हैव जस्ट कॉपीड वो सेंटेंस. you what you can do is go to a new chat. इसमें you can just enter it and press enter and it'll create. I've already done this for you, so to in the interest of time. So इसमें it'll write में दो ऑप्शंस. एक बैलेंस्ड अप्रोच है, इसमें एक बड़ा ईमेल जैसा इट हैज रिटन. एक दूसरा है सेफ्टी एंड डिसिप्लिन के लिए फोकस करके इट इज रिटन अनदर मैसेज. नाउ यू नो योर कस्टमर्स बेस्ट, सो इसमें यू कैन चूज विच एवर फिट्स फॉर यू. बट अभी आपका कस्टमर्स पूरा समटाइम्स व्हाट्सएप पे होंगे, सो यू माइट नॉट बी, दे माइट नॉट बी यूजिंग ईमेल, so you might need a WhatsApp version of this, right? So what I can do is I can easily ask it, just one second. Yeah, I can ask it to create a WhatsApp format as well. So I will just go back to the first point I said. ये आपके साथ एक डिजिटल असिस्टेंट जैसा टूल है. तो आप पहला एक प्रॉम्प्ट यू कैन सेंड आस्क इट टू डू अ टास्क. उसके बाद आपको रिफाइन कर सकते हैं एक एक स्टेप में. सो इसमें एक दो ऑप्शंस मिला है मेरे को इन टर्म्स ऑफ. ऑप्शन ए है थोड़ा कंजर्वेटिव बैलेंस्ड अप्रोच में, तो ऑप्शन बी था सेफ्टी एंड डिसिप्लिन अप्रोच में. बट मेरे को व्हाट्सएप में चाहिए था ये मैसेज. तो आई हैव आस्क्ड इट टू क्रिएट अ व्हाट्सएप मैसेज एंड देन इट इज क्रिएटेड दैट इन अ सिंपल format. I've also given, so if you give the customers details, it will also create that in the customers details for you. तो इसमें let's say it is created now the two approaches in for a small WhatsApp message. Now एक और चीज कर सकते हैं where you can create this in Hindi. आपको customers पूरा, if you can talk to your customers in Hindi, you can ask AI to just write the same WhatsApp message in Hindi. दोनों options आपको हिंदी में मिलेंगे. Now आपको बस एक चीज करना है, ये कॉपी पेस्ट करके आपको WhatsApp में डाल के सेंड करना है. Now this is for one customer. I will also show you how you can do this for 100, 200, 500 customers in one go. ओके, सो वो पर्सनलाइज भी होंगे एंड विद देयर नेम, एसआईपी रिमाइंडर का अमाउंट सब. तो आई विल शो यू दैट. बट ये बहुत फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि ऑल ऑफ यू माइट नॉट हैव ट्राइड. बट ऐसे तीन स्टेप्स में आपको हिंदी में बहुत प्रोफेशनल एसआईपी रिमाइंडर मिलेंगे इन बस 30 सेकेंड्स. आपको बस कॉपी पेस्ट करना है व्हाट्सएप में और सेंड करना है. सो दिस इज आर द फर्स्ट example. Now is ऐसे you can create multiple चीजों, like I will cover multiple of this in the next slides as well. But बस आपको 5 सोशल मीडिया में आइडिया चाहिए क्या आपका कस्टमर्स में दिवाली में you have to send to encourage mutual fund investing. AI will give you that 5 ideas. आपको एक पर्सनलाइज एडवाइजरी और सजेशन देना है आपका क्लाइंट के लिए. वो 50,000 इन्वेस्ट, इसका रिस्क कैटेगरी ऐसा है. And you can also check your existing customers if you want to see, if you want to suggest some of that to them. ये सब you can start doing, but I'll go through more detailed examples in each of these. So these are the 6 core areas that we are going to cover. And if you have any questions, please keep them handy. At the end of the session, I'm going to open up the floor for 15 minutes. But if you feel the question is highly relevant to the slide I'm talking about, feel free to put that in the chat as well. But we'll be going through these 6 areas. पहला area है कि client communication or engagement. As you saw, I can help you create a simple WhatsApp message as an SIP reminder. I can create a Diwali greeting. I can create a Eid greeting, whatever may be required. But personalized उस scale में, मतलब 100 customers है, 100 customers के लिए in one shot I can help you create that. Second thing is client acquisition. The client acquisition के लिए how can you create social media content. ये content के लिए पूरा कैलेंडर आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स और नेक्स्ट 2 महीना के कैलेंडर कैसे प्लान कर सकते हैं एआई के साथ, और आपका टॉपिक्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं. एंड सीआरएम एनहांसमेंट. सो सीआरएम है कि आई विल गेट इनटू दैट, बट सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है.
उसमें इफ यू कैन यूज एआई, आपके ऑलरेडी सीआरएम है, सीआरएम नहीं है, हाउ कैन यू यूज अ सिंपलर वर्जन ऑफ सीआरएम दैट आई विल बी शेयरिंग यू एज वेल आफ्टर दिस कॉल। और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के लिए हाउ कैन यू स्टार्ट यूजिंग एआई। मार्केट रिसर्च के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मार्केट में बहुत बहुत अभी भी ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस में बहुत हो रहा है। 1 सेकेंड, आई थिंक, या सो इवन ग्लोबल मार्केट्स में बहुत हो रहा है अभी। सो हाउ कैन यू डाइजेस्ट वो इंफॉर्मेशन टू सिंपल 3 पॉइंट्स आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए यूजिंग एआई। सो आपका टाइम will be saved in multiple hours and you can send that to your customers। और आपका पोर्टफोलियो एनालाइज करना है, आपका कस्टमर्स कैसा एज ग्रुप में है, कैसा रिस्क कैटेगरी और एपेटाइट में है, वो सब। एंड देन इफ यू वांट अदर सजेशंस आपका पोर्टफोलियो में कैसे रीबैलेंस करना है मार्केट कंडीशंस में, टू गिव यू आइडियाज टू think about, that also can be done using AI। So first, before we head into I did a basic understanding of AI, कैसे open Gemini और ChatGPT आपको वो ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं, और उसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। बट इन नाउ वी आर गेटिंग इनटू द सेकंड फेज, ये 6 टॉपिक्स में हाउ कैन यू स्टार्ट यूजिंग। It's so we generally recommend Gemini or ChatGPT. I personally use Gemini in most of the cases for such similar use cases. ChatGPT भी अच्छा है। आपको एयरटेल के साथ परप्लेक्सिटी का फ्री वर्जन है, तो then you can use that as well। Yeah, so this is the things that I recommend। आपको ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज जनरेट करने के लिए you can use ChatGPT और Gemini। इमेज इफ यू वांट टू, आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है, वो सब के लिए मेरा पर्सनल प्रेफरेंस जेमिनी है, क्योंकि उसका इमेज क्वालिटी बहुत सही है और कम वर्ड्स में हो सकता है। आपको रिसर्च करना है, मतलब डॉक्यूमेंट्स और आरबीआई का सर्कुलर और सेबी का सर्कुलर कुछ भी, वो रिसर्च करने के लिए गूगल का एक दूसरा प्रोडक्ट है, नोटबुक एलएम। आप ये नोट भी कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड नोटबुक एलएम इस लाइन में। और तीसरा है कि एनालिटिक्स और आपको ऑटोमेशन करने के लिए यू कैन यूज बोथ जेमिनी और चैट जीपीटी। आई विल शो यू दैट एज वेल। तो आई एम गोइंग टू द फर्स्ट टॉपिक, है कि क्लाइंट कम्युनिकेशन और एंगेजमेंट। इसमें आपका करंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको 100+ कस्टमर्स है। हाउ कैन यू use AI with currently you use 2 hours 3 hours a day to just communicate with one of your customers, so you go through 100 customers in a week, that takes a lot of time और आपको क्लाइंटेल बढ़ाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, बिकॉज एंड ये सब it becomes very inconsistent, or they will reach out to you first and then you will start responding। बट इसके लिए एआई बहुत हेल्पफुल है। यू कैन पर्सनलाइज द मैसेजेस फॉर ओवर 500 क्लाइंट्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, और आपको बहुत प्रोफेशनल ग्रेड क्वालिटी भी मिलेंगे। तो आई show you that exact example that we just saw about writing an SIP reminder, but how can I do it for 100+ customers, right? So this SIP reminder that I've created, what I'm going to do, मेरे पास एक डेटाबेस है, CRM डेटाबेस फॉर MFDs that I've created on Google Sheets। ये शीट भी आई विल बी शेयरिंग एट द एंड ऑफ द सेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज आपको हेल्पफुल होंगे। So here, as you can see, I have my customer list, let's say 20+ customers that I have mapped here। उसका ईमेल है, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज है, कौन सा सिटी में रहता है, व्हाट रिस्क प्रोफाइल है, मॉडरेट, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, एसआईपी रिमाइंडर कब है, फोन नंबर, सॉफ्टवेयर, ये ऑक्यूपेशन क्या है। ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज देयर विथ मी करंटली। आपको ये नहीं है ज़रूरी है एक शीट में डाल के, यू नीड टू ऑर्गेनाइज ऑल ऑफ दिस। शीट नहीं है तो इनसाइड योर सीआरएम, 30% of you might be using a CRM, but so what you can do is उसमें you can download or export वो database, and then I'll help you do what I'm going show
I'll help you write a SIP reminder for all of them in one shot. Okay. So now I have all of this information here. What I'm going to do is इसमें Google Sheets में एक export option है, download option. इसमें I can select Excel file और CSV. इसके लिए AI के लिए CSV बहुत easier होंगे, क्योंकि वो AI के for AI to read data it is easier to use CSV. So इस example में I'm going to use CSV. but एक चीज रिमेम्बर करना है कि CSV में बस एक शीट डाउनलोड करेंगे, बट देयर आर मल्टीपल शीट्स हियर नीचे इफ यू कैन सी. बट इफ यू डाउनलोड एज CSV एक ही शीट डाउनलोड हो जाएगा. तो इसमें आई एम जस्ट डाउनलोडिंग दिस शीट, saving that, going back to Gemini, going to take a new chat. The file that I have downloaded, I'm just attaching it here, and I'm going to write the same reminder text that I had written to create a reminder. ये है कि create an SIP reminder and with sorry. Yeah. So इसमें what I've written is I have to, so ये पूरा मेरा customers list है. Create an SIP reminder for each of my customers in a new column. This is to be sent via WhatsApp based on their reminder date, mentioning keep it short, end with greeting. Yeah. So what I've done here is इसको एक instruction दिया है that एक नया column बना के उसमें create an SIP reminder and end with ये message greetings मेरा नाम. in इसमें you will write your name here and just giving ये AI को थोड़ा और context so that they can understand it better. Or I'm just going to hit send. So it'll take 10 to 15 seconds. Let me see if I have already done it. Uh, mm, I think it has not done it. So by this time, sorry, even in that 30 seconds, it got completed. So ये पूरा it has processed. और इसमें it has added a new column SIP reminder WhatsApp new contains a personalized SMS. ये एक example भी है इधर. Now what you have to do is you can just click on ये link और ये file. Yeah, sorry, just this file here. It'll get downloaded. As you can see, it has created that file और एक नया column बना हुआ है. इसमें SIP reminder पूरा customers के लिए it is created by itself. So I'll just download it and show you in Excel. तो आप ये कॉलम देखो, ये आरव शर्मा, मीरा सिंह, रोहन कपूर, अनन्या गुप्ता, ये सब कस्टमर्स के लिए एक पर्सनलाइज्ड मैसेज बना हुआ है. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल. आपको एक और कॉलम यूज करना है. ये रिस्क प्रोफाइल है. मतलब एक मॉडरेट इन्वेस्टर को थोड़ा डिफरेंस लगना चाहिए, एक कंजर्वेटिव को थोड़ा डिफरेंट लगना चाहिए. वो भी you can just add in your instructions that you're giving to Google, saying that okay, use my risk profile column to create a even more personalized SIP reminder message. So as you saw, it created all of this in 30 seconds. It'll take probably a minute for if you want to create for 100 people, but it'll create more personalized message for all of you. So yeah, this is a simple example. Nitin, there's a Yeah, request to explain it one more time. sure. So I'll take you quickly through it again. आपका ये कस्टमर डेटाबेस है, विच इज पूरा कस्टमर्स का लिस्ट है, उसका ईमेल है,
बर्थडे, कुछ भी, whatever information that you want have about the customer and that you have saved. But इसमें I am just using SIP reminder में एक date column है, वो इस महीना का for that customer 18th March, or let's say today is the SIP reminder date, right? So that I have saved in an Excel file or a Google Sheet somewhere. बस एक ही काम करना है. इफ इट इज इन अ गूगल शीट, आई जस्ट हैव टू डाउनलोड. आपके ऑलरेडी एक्सेल फाइल में है, देन यू जस्ट हैव टू अपलोड दैट एक्सेल फाइल. और बस टेल एआई विच शीट में, विच कॉलम में दिस डेटा इज देयर. ओके, सो आई हैड डाउनलोडेड ये शीट वंस, so I'll just click download again just to show it as an example. So a camera separated values I have selected. I can select Excel as well. क्या Is Gobi ji, you want to say something or accidentally? I think it's accident. Okay. So I have downloaded it. उसके बाद I went to Gemini. एक नया chat I took. Just put this file that I have downloaded into the window, or I can do it if I don't have this, I can just upload file. Either I can click upload files. मेरा downloads में ये file है. I selected that. उसके बाद I'll just have to tell AI what to do and कैसे करना है. So what I did was create a new column. Instead of doing it again, I will just tell you the prompt. Create a new column to create an SIP reminder for all of my customers based on the SIP reminder date that is present in the file. तो वो use करके AI will create an entire for each of your customers line by line will create that. And बस आपको ये copy paste करना है आपको WhatsApp में. So for everyone, पूरा personalize करके you have created this message as well. I hope that explains. If not, I can take some more time at the end of the session to take you through it again if you have any doubts. Is that okay? Okay, I will carry forward. So this is one of the examples that I showed, SIP reminder wala, where you can create. I just asked. Hello. Yes. Hi, I sir. have one question. Yeah. Once we have created this file, Yeah. and we will have to put for every client we have to copy and paste, or can we go it in one go if some group is already there? Correct. So if group, अगर ग्रुप रहेगा तो आप सिंपली डियर इन्वेस्टर डाल सकते हैं, क्योंकि वो ग्रुप में you have a combination of investors, so you can just simply I'll rephrase it. If I have a broadcast list. Right. Okay. Right. I get you. Yeah. So broadcast list, how broadcast list works is it is a single message to all the people. So that won't work. But what you can do is you can use ये automation के लिए tools है. There is tools like AI Sensi. I'm not sure if you've used them, but उसमें you can bulk upload a WhatsApp message list customer के number के साथ, but उसके लिए you need a WhatsApp business number. So WhatsApp में कुछ भी automate करने के लिए you will need a WhatsApp business number. Otherwise, the only way is to use a broadcast list, which is a single message to everyone, or you have to manually send it to each of them personally. So yeah, to create a WhatsApp business message, you can there is multiple YouTube videos for that. You can create that, or I'm not endorsing this platform, but I've heard from people that this is a good platform. Or Zoho, if you are using Zoho or any other CRM tool, इसको भी यूज भी कर सकते हैं. In AI Sensi, here you can automate a lot of your WhatsApp work. Zoho में भी WhatsApp automation है, but उसका steps का videos उसके साथ है. I've also added some videos into this link, into the deck as well, to help you set up and all that. Sorry, to help you set up, so you can use those as a reference as well. Thank you. और तीसरा है कि you want to write personalized festival greetings to everyone. You can use
this method as well. आपको if you want to create a weekly market update, what you can do is you can ask AI to create that update, and you can send it to your broadcast list in one go, because that need not be personalized. But you can create quick updates, and I'll show you how. Let's say आपका नया इस फाइनेंशियल ईयर का बजट रिलीज होगा, उसका शॉर्ट समरी बनाना है फॉर योर इन्वेस्टर्स, हाउ यू कैन यूज दैट एज वेल. So before I head into the next session, I'm just going to do a quick poll. Second, yeah. आपका अभी what is your biggest problem? पेन पॉइंट क्या है? क्लाइंट एक्विजिशन है, टाइम मैनेज करने के लिए, आपको प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएट करने के लिए थोड़ा मुश्किल है, और communication with the client is becoming difficult क्योंकि आपके पास टाइम और कंटेंट जनरेट करने, like it's a mixture of all of them. So everyone, आपके सामने एक poll or quiz would have come up front, so just if you can quickly add your responses will be helpful. It helps us personalize the next few sessions, next few slides as well. I'll just wait for another 10-15 minutes. Sorry, 10-15 seconds. Sorry. Okay. So I'm ending the poll now. I've got a good number of responses. So for all of you, one thing that I can see is आपको client acquisition, 40% of you, that is becoming a difficult area. That is a multiple level sort of problem. आपको outreach करना पड़ेगा. How do you how do you reach out to your customers? How can customers get to know you? आप ये services you are doing a lot of these services, आपको इतना clientele है. I'll cover a lot of that, how you can improve your client acquisition journey. Time management के लिए I've showed you how instead of making hundreds of messages or communicating with your customers, you can one shot create so many personalized messages for your customers. एक और step, if you do, like Saurabh ji asked very rightly, how can you automatically send this out? Then you can use WhatsApp automation tools. वो बहुत simple tools है, उसमें बस ये Excel और CSV export करके upload करना पड़ेगा, और उसके बाद you can send them out automatically as well. Content creation I will cover, and content creation, client communication on research वाला topics, or for social media, दोनों topics I will cover as well. So one important cheese, as you can see, for client to manage 100+ customers, it becomes really difficult. For that scale, आपको to remember सारे customers का conversations, वो कितना amount, कितना EMI है, EMI नहीं SIP है, all of that to remember, and then how can you help them personalize that? You will need ये data to be in some place. And this AI era में ये बहुत important चीज है, क्योंकि AI can only work with digital data. It cannot work with एक डायरी में आप if you've written it, or if you've written it in an Excel file, आपका Excel वो आपका कंप्यूटर में एक फाइल में होगा, so AI will not have access to that today. Tomorrow I'm sure AI will start, you will be able to give those access to those files, but today आपके बहुत जरूरी है ये data store करने के लिए, right? So there are multiple options that we suggest. They have no relation to our companies or our business. These are just easiest CRM options that you can use. Yeah, as easiest CRM options that you can use. Zoho दोनों Indian companies है. Zoho और HubSpot. HubSpot is an Indian founder, but US company है, but Indian founder है.
जो आपका पता होगा ऑलरेडी, एंड गूगल शीट्स है, बहुत सिंपल फ्री चीज़ है और उसमें एम्बेडेड एआई फीचर्स है, उसके सामने एआई फीचर्स इंक्लूडेड है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं. And to set up all of this, I'll be, once you share the feedback, ये सब links आपका email में आएंगे, और you can, whichever you want to set up, or the Google sheet that I just showed you. Sorry, not this. This Google sheet that I just showed you, this also I will be sharing. This you can use as a CRM as well, क्योंकि इसमें आपको AI, you can export and use it to automate things in AI. So this, if you are not comfortable with different tools, ये बहुत सही starting point है. तो इसमें social media calendar you can create and put it here. Whatever you want, you can use this as well. So yeah. So one thing that I showed you was the power of the CRM, right? How do you create all of the things in one go, which I just showed you, but it was only possible because मेरे सामने एक Google Sheet where पूरा customers का data was available. Yes. Yeah, so someone is asking, there are 3 or 4 Zoho applications, which is helpful for us. So there is Zoho CRM specifically, Zoho CRM for small businesses, small or medium business. So you can use this particularly. Zoho का expense tracker है, आप सही है, ज़्यादा applications है, but Zoho CRM is what we recommend. So yeah. तो डालने पड़ेगा, वहाँ 17,000 का बिल बना है इसका सर्विस सेंटर में. Okay. So what I just showed you how to create, आपको CRM है आपके पास, then आपका productivity बहुत multiply होंगे, because then you can create all of this in one go. नहीं है तो then you have to create सब customers के लिए एक एक question पूछना पड़ेगा, which is not time or helping you save time either. तो ये CRM सेटअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद I've shown you how to create this content for all of your customers. Now this is not very tense, right? Like CRM के साथ आपको birthday reminders वो सब automate भी कर सकते हैं, because now you can have all of this content created for them on their birthdays. आपको कुछ अदर और इंफॉर्मेशन, आपको SIP रिमाइंडर्स के बाद आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का रिमाइंडर्स, ये सब once you start. So all of this we've covered in a prompt library. Let me just pull that up. So Vikas ji has a question. He wants to know how to make financial planning with infographics. Infographics is covered as a part of this session. Please stay with us. Nitin will show us with examples on how we can do it with Notebook, LLM, and other tools. So it is going to be a part of the session. Yes, Vikas ji will be covering that in the next couple of slides. But iska, so CRM, if you have a data, if you already have the data of your customers ready, then you can try out multiple different prompts. इसका एक पूरा library Sanjana and I have created, where you can go through all of this. आपको sales के लिए दूसरा like different myth busters, आपको कुछ common mutual funds के बारे में कौन सा myths you want to use for educative purposes. All of this we'll be sharing with you once you share the feedback and get the certificate for the slide for the session. And इसमें और advanced like CRM setup करने का steps है, और advanced prompts है that you can use, and a full 30-day plan of how to go about it. इस दोनों power up prompts में you have advanced documents as well, which we'll be sharing with you as well. So all of this, all of this will be available for you. So we are just touching the surface ये बहुत because it's a 1 hour session, but आपके advance के लिए बहुत सारी चीज free में we are sharing as well.
So next comes the an important section in our this thing, which is what Vikas ji mentioned about how can you create infographics, how can you create a planning, how can you create a image-based thing. So I'll just do a quick poll just to understand where everyone stands with social media. So Sanjana, if you can explain this, it would also be helpful. सो यहाँ पे आपको एक पोल आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। आपको हमें ये बताना है कि आप सोशल मीडिया कितना फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। अभी अब अगर आप नहीं यूज करते हैं, विच इज ऑल्सो ओके, लेकिन इन दिस एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोग किसी ना किसी फॉर्म का सोशल मीडिया पे होंगे, जहाँ पे चाहे वो लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, और वहां पे आप लोग मार्केटिंग के लिए या बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको तुरंत शुरू करना चाहिए, क्योंकि आजकल सारे क्लाइंट्स ये सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है, वो लोग एक्सेस कर रहे हैं। और आप जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन और कंटेंट और एजुकेशनल आइटम्स डालोगे, आपका इंटरेक्शन उतना ही बढ़ेगा कस्टमर के साथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जहाँ पे हमने देखा कि कस्टमर एक्विजिशन एक बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट है आपके लिए। आप जितना एजुकेट करोगे, उतना ही ट्रस्ट बढ़ेगा, उतना ही नॉलेज बढ़ेगा। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए कैसे सोशल मीडिया आप यूज करके अपनी डेली लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं और बहुत इंटरैक्टिव भी बना सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। इट्स अ वेरी गुड मीडियम टू गेट यू क्लोजर टू योर क्लाइंट्स, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So I think the polls are out, Nitin. Yeah. So abhi, as you can see, around 40% of you use social media regularly. That is great. Aapke, yes, the next few slides will be even more helpful. If you are an occasional poster, we'll show you how you can use AI to make you more frequent. So if you are posting once a week or once in 2 weeks, how you can post every 2 days, every 3 days, वो पूरा कंटेंट कैसे बनाऊंगा और how you can use AI for that. और तीसरा है कि आप बिगिनर है, you rarely use post. It's a great time, like Sanjana mentioned, आपको start करने के लिए, and I'll show you multiple types of things that you can post right after this. Yeah, sorry. Yes. So ये एक बहुत बेसिक फ्रेमवर्क है just to make आपका lives easier. If you're already posting a lot on social media, ये आपका पता होगा, but बाकी लोगों के लिए ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है। How do you, कौन सा टाइप ऑफ पोस्ट डालना है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप स्टोरी में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, wherever your customers are there. आप so where how do you decide कौन सा टॉपिक? तो जनरली ये फ्रेमवर्क बहुत सक्सेसफुल है मार्केट में, बट दिस जस्ट अ फ्रेमवर्क। आपको ये आपके लिए पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। तो 40% विल बी एजुकेशनल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स एंड म्यूचुअल फंड्स इज अ कॉम्प्लेक्स स्पेस। आपको कस्टमर्स को कैसे easy you can share these concept. So 40% of the posts that you do should be educational. बाकी 25% can be market updates, क्योंकि a lot of things are changing. How will it impact? Should we exit? Even I ask my investors or my managers, should I exit my funds? Should I keep it? What should I do? All of that. So giving proactive market updates बहुत जरूरी है। और एक तीसरा चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज आपका सक्सेस स्टोरीज, आपके कस्टमर्स बेस। इफ यू कैन आस्क द कस्टमर टू नेम देम, if you can use their names, or even without that, if you can have a testimonial from them, or how they can how you have helped them get really good returns through your investments, by helping them invest through you. Or लास्ट चीज है कि व्हेन यू शो ऑल ऑफ दिस एक्सपर्टीज इन द फील्ड, आपको एजुकेशनल, सही एजुकेशनल कंटेंट है, वेरी गुड मार्केट अपडेट्स और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है,
उसके बाद you have to do some personal branding also, because they have to know, okay, you give these services. You also have to tell that, what are the other type of uh, who you are and why they should trust you as well. तो इस सारे topics में, even in these topics, there are multiple types of post that you can create. आपको ये वीडियो रील्स that you might have seen आपके इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप स्टोरीज में, all of that can be created to make it really personal and for them to gain trust. What I would recommend is आप AI use करके create a small AI will create the entire script for you. आप बस कैमरा देके बनाना है वीडियो, because that keeps the quality, people will relate to you as well as have more trust for you. Carousel paste, post, before after scenarios. I'll show a couple of these कैसे charts. How can you create a before after scenario? आपको myth busters, बाकी सब चीजें we have covered in the prompt library that we have shared as well. तो इसमें I'll start with a simple before after scenario or a carousel. I'll start with the before after scenario for ease. So I've created a simple example where, one second, yeah. तो ये है एक simple example that we are going to show. So when you want to create a explainer graph, I think Vikash ji, you are asking something similar to this. So what you need to do is, you as a mutual fund distributor, आपको you know a lot of topics, how you want to educate your audience, वो सब. So उसमें एक topic you can select. If you want AI to create those topics, you can just ask AI, okay, create 10 different or 50 different topics for me to help educate my clientele. I'm a mutual fund distributor. This is as simple as what you can ask AI. So इसमें this topic that I've taken, एक mock scenario है. एक Indian investor is investing 10,000 rupees per month, starting at age 30, and I want to compare it with someone who starts investing it after age 40. उसका wealth accumulated का difference क्या होगा if the annual return was 15%? And you can change anything here. आपको 60 age करना है, you can annual return you want to show as 18% or 12%, whatever you want. So इसमें what I've done is, I've just copy pasted that same statement here. Let's create a mock scenario. और इसमें what it has done, अब देखो that it has created a full graph. And I think someone was saying that, there might be error in calculation, all that. It used to be the case 3 to 6 months पहले that, AI used to make a lot of mistakes. Abhi it has improved quite a bit and it will keep improving. So next month it'll stop making, lesser mistakes. Abhi 5%, 2% का mistakes might be there, but ये illustrative चीजों में that is not super critical, क्योंकि ये more from an educative purpose, right? So इसमें, if you see someone who started at age 30 has created, so much more wealth than someone who started. This is something that but now it is given the full entire calculation of that and how it ends up being a much larger account, 3 crores compared to 50 lakhs for both of those people. Now, but this is not a very exciting social media post. आपको ये थोड़ा simpler और explainable होना चाहिए. So इसके लिए what I've done is एक second step करना है. Create a social media infographic with the same data to explain to retail investors with just the image. So बस एक image में पूरा story investor को बताना चाहिए. So in this, and keep it ideal for LinkedIn or WhatsApp forward. Why I said that is उसका size, मतलब it will be in a square image, and it has created this image. So if I just scroll down, just created this image. I just show you this. Sorry. Yeah. So this simple image with 2 prompts, it took me less than 1 minute. Power of investing or starting early, ये difference 25 year का investment है, एक 15 year का investment है. Total invested is slightly different, but wealth का difference at the age of 55 is much different to what it was to the other age as well, if you start at 40. So ऐसे, this is a simple example of how you can create
these type of images, right? So I'll just reiterate. Step 1 is एक topic select करना है, उस topic का analysis को आप if you are happy with the analysis, then ask AI to convert that into an image. You will get an image like this as you see on the right. Now दूसरा एक कि आपको एक budget का report आ गया and then you want to show okay, this is simple outcomes from the budget that I have to create. But इस time में I've selected the topic that budget 2026-27 है मेरा topic. So but I want to show ये before and after scenario क्या है for an Indian retail investor. So then it'll create a पूरा lengthy message. I will just show you that I did this in ChatGPT. They'll show you a pura what is the before and after scenario for an Indian retail investor after the Indian budget. It has brought me full links, documents, पूरा lengthy explanation है क्या difference है before and after the budget. But ये बहुत लंबा है, मेरे को बस short and crisp चाहिए क्योंकि मेरे customers का attention उतना ही है. So I've asked it to create exactly what I wanted, which is keep a simple carousel explaining these changes, but keep it short and crisp. So इसका content 8 slides में बनाया, but 8 slides भी बहुत ज़्यादा है. So then I asked it, okay, बस 3 slides बनाना है, उसमें बहुत important चीज़ क्या है, वो 3 slides, just keep those 3 slides, right? So then it created all of these 3 slides that you see. उसका, what is relevant for them, what is relevant for now. And it created all of this. But all of this can be created in a minute. वो है ये बहुत important चीज इसमें. तो next ये सारे topics है, educational है, market updates है, success stories है, personal branding है, और इस सारे different type of social media posts भी है. But ये सब plan करने के लिए और like you will have to अभी spend a day to plan all of this. But ये भी AI will create for you. So you don't have to create anything. What you only have, so the only thing that you have to do is go to AI or ask it to create a entire social media calendar for you. So इसमें if you see, I have written I am a mutual fund distributor. I want to create a social media calendar for the next 3 months and help my clients understand more about mutual funds. And इसमें ये 3 चीज cover करना है, which is educational, reminders और other insights. So इसमें it has created, so this you can personalize आपको कैसे करना है all of that. And it has created a full week 1 plan, 3 post, every week 3 posts में क्या क्या टॉपिक्स बनाना है और कौन सा टाइप का इमेज करना है. So you can do whatever that is required and you can export this as an Excel or somewhere, और इस sheet में, इस Google sheet में you can also see a similar calendar that we've created for you. उसका caption भी है, so if you feel this is the right thing for you, you can just copy paste this caption and then it'll create that image for you. तो पूरा प्लानिंग सोशल मीडिया आपका प्लान, पूरा प्लानिंग भी यूज एआई. कौन सा टॉपिक्स, टेल मोर अबाउट यू. मैं नितिन शाह जी हूँ, आई हैव 100+ कस्टमर्स, आई these are different types of customers that I have. इसके लिए I want to create a social media calendar to help them as well as others see what the work I'm doing. So ऐसे personalize करके you can keep asking AI to create that calendar for you. Yeah, the next bit is infographics, which I will show you how you can create AI-driven summaries, using for news that you might see. आपका अभी global market में बहुत changes हो रहा है. How do you want to see how oil price is going to impact, the market? You want to send a small note to your customers. और सारी like SEBI का नया regulation आ गया, इसमें क्या difference होगा, all of that, right? So इसमें भी what you can do is again आपका topic में confusion है, कौन सा topic लेना है, then you can ask AI itself कौन सा topic should I talk about. If you already know a topic, which I will just show you एक
टॉपिक दैट वी टुक अप, क्योंकि अभी सेबी का एक नया सर्कुलर आ गया. Yeah, I think it is this. So there was this new circular that SEBI had released. Let me just confirm which one it was. Sorry, RBI, yeah. It was. Yeah. So this, I will just download this. Second. Yeah. So this RBI ka circular. Let me just show this to you. Let me see if I can. Okay, regardless. So RBI when एक circular when they release, they have a full PDF or a downloadable PDF that you can have. आपको बस वो PDF you can create. This is notebook LM. If you see notebook LM, ये research और infographics के लिए बहुत सही है. तो इसमें just create a new notebook. इसमें कुछ PDFs है, कुछ links है, कुछ YouTube videos है. All of that you can add. So I'm just going to upload if that file is already there. Let me just see. Yeah. So this file that I'm adding, I'll just open that file for you as well. Yeah. एक नया circular था where you can take loans against securities, right? And this is very relevant for mutual fund distributors क्योंकि you can ask your customers to invest और उसका cash requirements में you can ask them to take a loan against their securities as well. So ये पूरा 100 पेज का document है, right? Like, and your customers will not know about this, neither will you have the time to go through all of this. तो इसके लिए as I said, just upload this document notebook LM में और इसमें बस एक इस chat window में बस पूछना है create an infographic to help retail investors understand this and how they can plan their finances better given they can now take loans against securities, right? So इसमें it has already created an infographic here on the right side. If you see, it has created an infographic. आपको बस कुछ like what the other option is, बस एक ये upload करना है और click on the button infographic. ये automatically एक infographic बनाऊंगा और the other option is आपको एक slide बनाना है. पूरा एक article है उसका पूरा slide deck जैसा बनाना है. You can create that using the slide deck feature here as well. तो ये बहुत super tool है and is completely free. You don't need any subscription. And इसमें if you, I'm just opening that image that it created. So if you see here, ये पूरा condense करके it has made a very beautiful infographic. So borrowing against your portfolio, आपका पूरा eligible assets है, what are the borrowing gaps. So loan to value is the main thing, and this is what requires what right? Like whatever that document had, it has पूरा your listed shares or debts you'll get. Equity mutual funds में 75% ceiling है और debt mutual funds में AAA rated में 85% ceiling है. So all of this was created in a simple click, right? And I just added this, or you can just click here. It'll create from whatever PDF you've uploaded. Yeah. So ऐसे I've also created एक सेबी का circular जैन में आया था, वो PDF अपलोड किया. उसके बाद I asked it to create an infographic and kept it very particular to retail investor, क्योंकि ये summarize करने के लिए it might not be relevant in retail investors को. So you just keep adding that point and then it'll create a summary and an infographic as you see on the right. So
and you can use this to analyze any document. आपको portfolio है, you want to understand your portfolio, all of that can be done here as well. So yeah, I'm just heading to the last section of the session. Okay, how do you understand how your customers are doing? उसका portfolio allocation क्या है? What type of risk and others can be avoided with your customers? All of that. इसके लिए again CRM में data चाहिए. आपको Excel में data है, that is good enough, but you will need some data in your CRM to start with. तो उसमें what you can do is आप ये sheet, if you have already set this up, first step after this call you should try to set this sheet up. उसके बाद what you can do, ये सब data you can download and send it to AI like I did last time. So उसमें ये I have already done this for the same data. तो इसमें AI CRM ये वो same sheet था, ये आरव शर्मा और सबके details वाला sheet. I just uploaded this and asked AI analyze this file and provide me insights about my customers. So उसके बाद 1-2 मिनट में ये पूरा एनालाइज किया है. मेरा रिस्क प्रोफाइल में मॉडरेट का प्रोफाइल इज ऑन द slightly younger side. There are people who are going from 36 to 40 that are slightly aggressive. Conservative investors are across the board for my portfolio. और कौन सा जॉब प्रोफाइल है, where are they staying, which city are they staying in, majority of my customers are moderate. ये सब चीजें it has created, right? इसका पूरा analysis भी दिया है. Now, as I think some of you asked, how can it how can you start if you have a customer's data, उसका portfolio review कैसे कर सकते हैं, all of that. You can, if you have the data in the Excel format, you can ask it to do that. और बस if you copy paste the एक customer का data इस sheet में है, let's say, yeah, इसमें पूरा customers. One second. Yeah. If you have all of the data ready, then you can just copy paste this, put it into Gemini and ask it to tell उसका distribution कैसे improve कर सकते हैं, what are the recommendations that you can use. So yeah, this is a simple way of analyzing your customers, and we are just touching the surface, right? इसका पूरा detail के लिए we have again shared more such use cases, ये library that we'll be sharing with you. So please go through that after the session. Yeah, I think someone asked, where will you find CRM? Yeah. हेलो हेलो Yes, hello, Verma ji. सर, ये एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस ऑफ द डेटा इज a subject while I was using this chat Yeah. AI chat GPT. हाँ, I find there were so many mistakes in calculations and correct. data. Got it. So वो सही है. I am not saying data में पूरा. What we do at, like, because I use AI every day. So what steps I take is, one, do not upload a lot of data, right? So do not overload the AI with too much data. And generally what I've seen is Gemini is far better than ChatGPT. ChatGPT ज़्यादा mistakes I've seen happen as well, like you said. Gemini Yes, better है. और दूसरा, ये आपको कैलकुलेशंस ऐसे वाला कुछ करना है दे. तीसरा भी है, वो इसका नाम है क्लॉड. will you सी, please या spell Claude? CLAUDE. LAUDE Claude. या इसका कैलकुलेशंस और बाकी सब बहुत. हाँ, संजना जस्ट पुट इट इन द चैट एज वेल. तो इसका मैथ एंड बाकी सब बहुत सही है. एंड रिसेंटली, बिकॉज लास्ट 2 हफ्ते में क्लॉड का नया इम्प्रूवमेंट्स के लिए यूएस में मार्केट्स भी क्रश हुआ है क्योंकि उतना करेक्टनेस इसमें मिल रहा है. बट आप
करेक्ट है, ChatGPT में थोड़ा प्रॉब्लम आई हैव आल्सो सीन. Sir, या okay, okay. Another question, is it available free or I will have to buy it? सो ऑल दीज थ्री आर फ्री. सो Oh, उसका डेली कुछ यूसेज लिमिट्स होंगे, मतलब बट दैट वी yeah. यूज नॉर्मल यूजर्स को वो लिमिट्स इतना इफेक्ट नहीं कर सकते. बट Uh, इफ यू यूज इट, इफ यू बिकम अ प्रो यूजर, उसका प्लान स्टार्टिंग एट $20 है, 1600 कुछ महीने में. तो आपको once you start using it daily, 10-15 times a day, maybe if you use 50 times a day, then you can think of getting a paid Sir, if I version. am having a Yeah, portfolio of my client yeah, and in present scenario of the market, I want to uh, convince them to increase their investment, either SIP or lump sum, whatever. How yeah, can I create the content to share to the client? yeah. That is a very good question. So I'll actually take that question right now, because wo I think is a very relevant question in Yeah, today's market. तो आपने like you rightly said, right? Like आप today's market, because there's a lot of changes, but इसमें बहुत uh, there needs to be explainability, क्योंकि आपको explain भी करना पड़ेगा, like okay, why if you invest today, the sir, we returns. can share one pager type of material to the client. Yeah. So what I would do is, so I'll break it into 3 steps, right? Like this example is a very simple example, but ऐसे वाला examples you can make. So two things that we generally see people do is, abhi, when the market crashes or has a correction, that is a great time to invest. But there is obviously both fear in the market, and people miss out on that. So इसके लिए what you can do is you can ask AI first itself, okay, given, let me do that right away, and let's see how we can create that, right? So so you can, I've just written what I've understood, but इसमें you can add more specific instructions as well. तो इसमें एक चीज that I've added is provide examples from the past, क्योंकि this has happened during COVID as well, other market corrections where you try to invest more during the dip, क्योंकि वो उसका returns better होंगे. So इसके लिए, so it will create a full, so as you see, it has created a, you know, table as well that you can use. But इसमें demonetization में 9-10% dropped. The returns are much higher. Code में 30-40% on average dropped across. Returns are much higher, right? So इसमें you can keep, so इसमें if the data is not 100% accurate, you can keep asking it to provide links and information. But ऐसे you can create a simple one pager. So Sir, if I will go for to check the correctness of the data, yeah, it is very time consuming. no, so you can ask AI to correct it. So what I will do is that, okay, please ensure that all data mentioned here is accurate and provide me links or references to all the data quoted here. So you don't have to go and check, which is a very good question, but
you don't have to go and check anything. AI will check that for you and add references sub B. So data references and sources, it is added a section. उसका verified through multiple ये NSE का site में. So Nifty 50 का PE ratio that it is checked. GDP forecast, historical drawdown. So if you want to add any other data sort, you can add that. But is sources में it has created this analysis report for you. So you can Should we mention some disclosure? जरूर. So वर्मा yeah. जी, नितिन 1 सेकेंड. Yeah. सो वर्मा जी, इसका मैं आपको एक हैक देता हूँ. जब भी आपके पास ऐसा कुछ रिपोर्ट आप बना रहे हैं जिसमें बहुत सारा आप डेटा कोट कर रहे हैं, ट्रेंड कोट कर रहे हैं, आप उसमें से जी. 2-3 चीजें पिक कर लीजिए और रैंडम बेसिस पे कुछ भी पिक कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो स्टैट्स चलती है, ट्रेंड चलती है, वो रैंडम बेसिस चलती है. 100% पे कोई नहीं काम करता है. तो आप 2-3 पिक कर लीजिए रैंडम, और उसको 2-3 अलग सोर्सेज से जाके चेक कर लीजिए. जैसे गूगल सर्च में आप चले जाइए, गूगल रिसर्च का अलग एक साइट होता है जहाँ पे सारे रिसर्चर्स अपना डेटा डालते हैं. आप वहां पे जाके 2-3 सिर्फ रैंडम पकड़िए. 100% आपको चेक करने की जरूरत नहीं है. आपको वहीं से पता चल जाएगा कि वेदर जो आपको जीपीटी ने दिया है वो करेक्ट है कि नहीं. तो आपको आइडिया लग जाएगा. Okay. That's how even analyst work. तो 100% किसी के भी बस की नहीं है चेक करना, लेकिन आप 3-4 रैंडम उठा लो, जो भी आपको लगता है कि अच्छा इसको पिक करते हैं, उसको पिक करते हैं, उसको पिक करते हैं, और उसको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दूसरी सोर्सेज से जाके आप चेक करो. आपको पता चल जाएगा कि वेदर योर डेटा इज करेक्ट और नॉट. Yeah. That is a good. Yeah. So a काम that you can do is ये same thing. You can go and put it in ChatGPT. You can put it in Claude. आपको notebook LM में भी you can add. And इस सारे चीज में whatever you think is apt and आपका story में fit हो रहा है, you can use that. Yeah. Lazy bird सही advice है. सही है. Yeah. Yeah. We'll That try is. and Yeah. Yes. Please try and let us know. Yeah. Yeah, so we are actually at the end of the session. With that, I'll open the floor for questions. And in the meanwhile, I'll just, with what you saw today, आपको कैसे AI use कर सकते हैं, if you can share that, will be really helpful if there are more sessions being planned. sir, I would like to know whether while I am on the screen and using AI chat, if I need I had some queries raised, is there any mechanism to ask you people? Can you repeat that? Sorry, did not. So Actually, his question, Nitin, while is using, say he's using one of the applications that we've suggested and he has a query. Okay. Is there a way to reach out back to us to get the clarification? Sure. I mean, we can. I think our contact details will be shared. If not, we can ask the team to share that. that will be very useful for us, sir. Okay, no worries. Yeah, happy to help as well. Thank you. Yeah. Kindly display the number on the screen. Yeah, so I will actually send my email if that is okay. Okay, before we end the session, I request all of you to scan this QR code as well to get all of this material, as well as I'll put the link of the QR code in the chat as well. Sorry, the form. So please fill the form and share, give us feedback. You'll also get a session का certificate भी, और आपको कुछ assistance भी चाहिए, feel free to reach out. The IT Birla team will help connect us. Yeah. So everyone, please, as we mentioned earlier, आपको बोला गया था कि आपको feedback देना है सर्टिफिकेट लेने के लिए, और जो डॉक्यूमेंट्स प्रॉम्प्ट्स के और 30-day प्लान का, तो आपके पास सामने QR कोड है. आपको चैट पे वृशाली ने लिंक भी शेयर किया है. प्लीज लिंक पे शेयर करके फीडबैक दीजिए. सेशन का नाम है जनरेटिव AI, ट्रेनर का नाम है नितिन शाह जी,
और अपने फीडबैक दीजिए। और अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं सेशन के बारे में, आप चैट पे भी क्लियरली लिख सकते हैं आपको कैसा लगा सेशन। ट्रेनर्स के लिए आप बता सकते हैं यू फाइंड द सेशन टुडे, बट टू गेट द सर्टिफिकेट इट इज नेसेसरी, आपको करना ही है, लिंक पे क्लिक करके फीडबैक देना है। और भी कुछ अगर आप कहना चाहते हैं सेशन के बारे में तो आप बता दीजिए। Yes, request everyone to share the